देन वी कम टू द पार्ट इज द ड्रॉ टूल्स. ओके, ड्रॉ टूल्स मीन्स जो आपको ड्राइंग बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ड्राइंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, ड्रॉ करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. ड्राइंग क्या होता है इन द सेंस where you create something to visualize somewhere. Okay, कुछ किसी को कुछ बताने के लिए आप कुछ बनाते हो, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग. ओके राइट. एंड देन ड्राइंग के लिए आपके पास क्या यूज होना चाहिए? ड्रॉ टूल. दिस इज योर ड्रॉ टूल्स, राइट. दिस टूल्स यू कैन लर्न अबाउट हियर. ओके, दिस इज योर सिंपल ड्रॉ टूल्स. This tools, this portion is called my draw tools, right? और देखिए written as a draw tools. यहाँ पे आपको draw tools लिखा हुआ है. तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या tools है? Line tool, polyline, circle, arc, okay, rectangle, ellipse, hatching, all are there are draw tools, right? Then come to the part, how can we use the draw tools? First of all, we talk about the line. Okay, anyone tell me what is line? Line क्या होता है? कोई बता सकता है? Point to one point to another point. Connecting for one point to other points is called line. Okay, यहाँ पे अगर आप दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हो, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज नेक्स्ट एंड पॉइंट, एंड देन यू कनेक्ट दिस टू पॉइंट, दिस इज कॉल्ड लाइन. ओके, यही होता है लाइन. ओके, अब हम बात करते हैं लाइन से हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे डायरेक्टली बाय यूज ऑफ द टूल. हाउ कैन वी क्रिएट योर लाइन्स बाय यूज ऑफ द टूल? देन यू कम टू दिस पार्ट राइट हियर. ओके, फॉर ड्रॉइंग द लाइन कुछ चीजें आपको सेटिंग करनी होगी. ओके, क्यों सेटिंग करनी होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज यस आई वांट टू ड्रॉ दिस थिंग. Okay, here we have the dimension is 500 by 50, right? Okay, मुझे ये ड्रॉ करना है. Okay? I want to draw this thing by use of line tool. Okay, not used for the coordinate system here. Then what we do? Just come to the part. What we do? Just enter L first, and then where you want to do, just right here. Cursor move on this part, and then right here is 100. Okay, and then if here I want to move, make a straight line here, then what's the you? Just right here is the value is 50. Okay, and suppose your cursor is not matching right here. Okay, and then here I want to write here is 100, 100 again, and then at last C enter. This is look like same as it is this portion. Yes or no? This is look like this or not? ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं या नहीं? नहीं दिख रहे? दिख रहे? नहीं दिख रहे? वही तो मैं पूछूं. ओके, what will be happen because this line will be not straight. ये straight नहीं है लाइन. अब ऑटोकेड में स्ट्रेट लाइन कैसे बनाए? ओके, यू आर ऑल आर द बिगिनर्स, राइट? तो यू कांट create straight line by direct way. Okay, then we need something. What we need? For this purpose we need one mode. This is called auto mode. What's the mode? It's called auto mode. The auto mode shortcut is F8, right? F8 is your auto mode shortcut, and here we have the auto mode option. Okay, this is your auto mode option, right? Over this I command, then this is showed as auto mode. You can click on the F8 also, and then we click on the this mode also. Okay, and I open the auto mode, and then what the auto mode do? When we add enter, then what will happen? Your line will be straight in each and every direction on the portion of the 90 degree, right? What we got here? We got straight line where not any line tilted for the any angle. Okay, straight line. We only got the straight line here. Then I make this part is 100 value just right here. Then move on concern above section, then right here is a 50, and then move on concern this section and right here is 100, and then after this C enter for close. What we do? This first point we enter. What we do? I'll enter and then specify first point anywhere. Okay. After that, I want to draw the line of 100 mm. Okay. What we do right here is 100, and then first 100 line will be drawn, and then next one is I draw the line in form of 90 degrees in a straight line of 50 right? And then click on the 50. This is 50 and then I want to draw this line in this direction. Then what will you do? Just here right here is a 100 again, and then after that I want to close this. Then what you do? Just use a C enter. C enter use for close the line, right? समझ में? कैसे आप ड्रॉ करोगे इस लाइन को, किस तरह से आप बनाओगे? यस या नो? आया आपको समझ में? गुड. ओके, तो आप देख सकते हो इसमें जितने भी एग्जांपल्स है वो सारे एग्जांपल इस ऑटो मोड की हेल्प से बन जाएंगे. ओके, ऑल द एग्जांपल विल ड्रॉ बाय द ऑटो मोड, राइट और नॉट? यस या नो? बन सकते हैं ये सारे एग्जांपल?
बिल्कुल, बना के देखे एक। चलो एक बना के देखते हैं। जस्ट क्लिक ऑन ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ये मिल गया। अब इसको मैं I want to draw this shape, okay, by use of this part. What we do, just right here is I'll enter first, and then click on any point right here, and then here what the distance is 40. Just right here is a 40. Here we draw the 40, and then above section I want to draw for 10. So just right here is a 10, and then this section what's the distance is 60. Okay, and then what's here is the distance is 10 again, right? And And then what's the distance is here 30. okay. Okay, and then what's the distance is here 20, and after the distance is 30. Just move on the cursor where we want to draw the any line, and then I create this thing. Okay, 30, and then again 20, and again 30, and then again 10. Okay, and then again we got the 60. Okay, and then again 10, and then after that what you do, the size of 40, and then C enter. Then what you got here, we got this ऑब्जेक्ट राइट, एंड देन वी फास्टली क्रिएट दिस। ओके, मैंने अगर इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम से बनाया तो मुझे काफी टाइम लग रहा था, राइट? ओके, बाय यूज ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम यू गेट अ टाइम, बट व्हेन वी यूज द लाइन एंड ऑटो मोड, then what will happen, my object is fastly made, okay, prepared. Okay, you create your object fastly, right? That's why we need this tools. Okay, अब next one is here, suppose here मुझे यहाँ पे drawings बनाने, next portion I use this here. Okay, to draw this type of thing where we have the tilt in 45 degree of the line, then how can we do this thing? We can't do this by use of auto mode. I can't do this thing by use of auto mode because yeah, this mode is only available for 90 on. Okay, only show the straight line in 0 degree, 90 degree, 270 degree, 180 degree, 270 degree. That's it. Okay, oh, its other angles can't be specified right here. Then what we do, for this purpose we use for this purpose we use okay, for this purpose we use what we use here. We have the option, next option is your polar tracking. Polar tracking shortcut is F10. What's the polar tracking? And here we have the polar tracking, and then one thing remember, one option will be always one off. Okay, one option is on, other option always automatically off. Okay, both option can't be off simultaneously. Okay, at the time, if you on the auto mode, then automatically polar tracking is off. If you on the polar tracking, then automatically auto mode is on. Okay, दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ ऑन नहीं रह सकते, क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि पोलर ट्रैकिंग आपको क्या देता है, ओनली स्ट्रेट लाइन देता है। ओके, मगर आपको किसी एंगल के अकॉर्डिंग देना है, सॉरी, आपका ऑटो मोड क्या देता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देता है, एंड पोलर ट्रैकिंग आप एंगल के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आप पोलर ट्रैकिंग ले लिए, राइट? देन वी हैव द पोलर ट्रैकिंग राइट हियर। तो क्या आप करोगे, एल एंटर किया है मैंने जस्ट हियर, एंड देन क्लिक ऑन इट, मैंने क्लिक किया। ओके, एंड देन व्हाट यू से, हियर वी गॉट द ग्रीन लाइन, ग्रीन reference line. This is your gain reference line. Okay, gain reference line, which direction, in each and every direction, which one direction you want. There is 30-degree direction you want, have a reference line here. 50-degree direction, any direction you want, then here you got the 45-degree direction right here. Okay, how can we get this line? By use of here, when we click on this part, then we got the direction, and then which direction we have, along with 5 degree, along with 5 degree. I want to along with 45 degree. Then what will be happen? I'll enter. Then here we got only the reference line in form of 45, 90 degree. Okay, each and every 45 degree along. Then what we go here? Reference of green line. Okay, and this reference line is usually for used for making your any object, right? Yes, yeah. Okay, then here I want to create the 45-degree angle of the this portion. I want to create this thing. Okay, right? So the distance is 100, all of there, and then here we have the 45-degree, right? Just use it, and then right here is 100. Okay, and then after that I want to create this V in here. Then what you do, just right here is 100 again,
and then here I want to just use this along with 100 degree, and then after that, what we do, just C enter and then close it. Okay, this object is created by use of polar tracking, right? You can create this type of thing by use of polar tracking, right? Or wrong? That's clear. If you want to do create this way, then how can we do that? For this purpose, we have the distance is 60 degree, right? And then here, which what's the angle of this line? Anyone tell me what's the angle of this line? Because you know about it, my angle is goes as the anti-clockwise direction. What? Anti-clockwise direction. If we 120. click on, okay, then what's the angle of this part? 120. 120. 120. Along with 60 to 30 degree, right? Then what we should do, just select here is 30 degree along with 30 degree. This we find out the 120 degree, right? Okay. Click on it, this part, and then what we do, just here, I use it as Al enter. Just use the Al enter. And then here, first point is this, and this is by 100, right? And then after this, here we do the 120 degree. Why at 120 degree? Because here we have the 60, there we have 180 completely, minus 60 is got 120. And then we angle, we always calculate in the direction of anti-clockwise. This is my anti-clockwise direction, right? Okay, that's why we got the values 120, and then here what we write here is 100. Okay, and after this, here we have the 240, and then right here is 100. Again, we want to outside go through the data, then click on enter, escape anyone. Okay, then click on enter right here. Okay, then we got out of the command. करेक्ट, ठीक है, कमांड से बाहर निकाल के लिए एंटर या एस्केप बटन, दोनों में से कोई भी आप बटन दबा सकते हो, राइट? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो बाय यूज ऑफ द पोलर ट्रैकिंग मोड, राइट? तो आप सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे ऐसे, ना हो जाएगा इजी। फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज क्रिएट करना लाइन कमांड से, एंड फटाफट हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है? मुझे नहीं लगता आप लोगों को टाइम लगेगा इन चीज को क्रिएट करने में, राइट? ओके, अब नेक्स्ट वन इज हियर, मैं लाइन कमांड के साथ ही एक चीज और बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक इनपुट। अब डायनेमिक इनपुट क्या है? व्हाट इज डायनेमिक इनपुट? Dynamic input option is here. Okay, we have this input, and then here we have the dynamic input option is F12. Okay, shortcut key is your F12. Okay, ये F12 आपका shortcut key है डायनेमिक इनपुट का। ओके, ऑन ऑफ करने के लिए आप F12 की क्लिक कर सकते हो। ओके, बटन पे प्रेस कर सकते हो। और द डायनेमिक इनपुट मीन, सपोज यार मुझे कुछ भी बनाना होता है, जस्ट क्लिक ऑन एल एंटर, तो मुझे कमांड लाइन देखनी होती है, क्योंकि मैं जो भी एंटर करता हूँ कमांड लाइन पे एंटर करता हूँ, राइट? ओके, क्या करना होता है मुझे? कमांड लाइन पे एंटर करना होता है, जस्ट फॉर इट हियर। ओके, तो मैं हर चीज कमांड लाइन पे एंटर करता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स आता है, जस्ट यूज एज अ बॉक्स एंड देन शो द वैल्यू राइट हियर। ओके, दिस इज यूज बाय यूज ऑफ डायनेमिक इनपुट। क्लिक ऑन द डायनेमिक इनपुट फर्स्ट, and then what you do, just I'll enter first, then what will have you appear the one box where we go show the value right here. When we click on this part, we have to show the value, and then also we can write the value inside it. Okay, and this will be easy for you. Don't want to need to show the details inside your command line. Just show the values inside over the dynamic input box, right? This is your dynamic input. What you do, just use for the straight line, you can use this portion. This portion is your auto mode. If you want to create only straight line, any drawing you can create by use of the straight line, then you can use the auto mode. You have to align with any direction, any angle. Then what you do, use the polar tracking. Okay, तो इस केस में आपको polar tracking यूज करना है जब आपके पास किसी एंगल के अकॉर्डिंग अलाइंड हो आपका ड्राइंग। ओके, एंड देन इफ यू वांट टू शो द वैल्यू इन योर स्क्रीन, okay, not on the command line, then what you do, just show on the dynamic mode। समझ में? ये तीन मोड आपके पास होने चाहिए। तीन में से ऑटो मोड तो के जब ऑन होगा जब पोलर चेकिंग ऑफ होगा, ठीक है? तो इन दोनों में से एक ऑफ ऑन ऑफ करके रखोगे। अच्छा, जस्ट के लिए आप लोगों को समझ में है? यस या नो? ओके, दैट्स गुड। ओके, if you if you want to do
अब एक चीज हो है लाइन के अंदर, मैं एक चीज और बता देता हूँ. I'll enter it here is line. Okay, and then I want to make this thing by use of this shape. Okay, I want to create the one triangle opposite of this triangle. Okay, and then joint with the this triangle. मुझे एक ट्रायंगल बनाना है इसी के अंदर ही, जो एक दूसरे से ज्वाइंट हो. ओके, मगर मुझे क्या चाहिए, इसके इस पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट. यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा तभी मैं बना पाऊंगा. यस या नो? ओके, कैन वी स्टार्ट विथ. अब चलो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया. ठीक है, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, लग रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है. यस या नो? लग रहा है कि नहीं? ओके, मैंने जैसे 100 दे दिया यहाँ पे, एंड देन आई वांट टू ड्रॉ दिस थिंग. ओके, तो मैं इसे ड्रॉ करना चाहता हूँ. तो सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ. देख सकते हो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है. तो इस पॉइंट को मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस पॉइंट. Okay, one option are there also for this purpose. Okay, we have to, I want to identify this point. Okay, so how can we do that? I just select it and erase it. Okay, for this purpose what we do, just use for this part is your snap mode, object snap. Okay, also you can open this object snap, its shortcut is your F3, and then one is your F11. Okay, you both option you can click, object snap tracking and object snap, right. ओके, ये दोनों ऑप्शन भी आपको क्या करना है, क्लिक करके रखना, ऑन कर देना है, ताकि आप इसमें पॉइंट्स को डिटेक्ट कर सको. देन यू कैन क्लिक द एल, एंड देन व्हाट यू डू, अब मैं इस पॉइंट्स को डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, राइट. एंड आई क्रिएट दिस पाथ, राइट, एंड देन 100, एंड देन I want to also make this path. Okay, and then I point to point, I just identify it and then click enter. Then here we can zoom it, the dot, we got the points in the specific points, right. That's why you can use the object snap also. Okay, we have two options. Here we have object snap tracking, and then here we have object snap. Okay, in both option you can want to on. Okay, that's right here. I also write here. This option is object snap. Okay, by F33. Okay, and then object snap tracking. Okay, both option you want to open right here. Okay, here we have the shortcut key is F11. Okay, by use of this way you can create this. Okay, that's clear to all of you, how to get your line command and this thing. Yes or no? आप सभी को क्लियर है यहाँ तक जो भी बताया मैंने? All have clear? Like how to use the line command, how to make the drawing by use of line command. Any doubts, any questions? No? Yes या no तो बोलो आप. किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है? ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं, फिर आप लोग लास्ट में लिख लेना ये सारे नोट्स. ओके, here we have to talk about the line command. लाइन कमांड को कैसे यूज करना है, एंड देन इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें यूज करनी है, वो सारे ऑप्शंस मैंने बात कर ली, राइट. एंड देन आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. आपको समझ में आ गया, हो जाएगा, बना लोगे ड्राइंग. ठीक है, अच्छी बात. ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज योर सर्कल. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज योर ड्रॉ कमांड इज योर सर्कल. सर्कल क्या होता है? एनीवन नोज अबाउट व्हाट इज सर्कल? किसको पता है सर्कल क्या होता है? कोई डिफाइन कर सकते हैं सर्कल को? एनीवन, कैन यू डिफाइन अ सर्कल? हम्म, कोई सर्कल डिफाइन कर सकता है? हम्म, देवेश, कुमार, मोहित, विजय, एनीवन?
Circle is a locus which consists of small points Small points. Where the small points equal have distance from the center, sir. distance is along with the center. Okay, we have the diameter and radius. Okay, and then any Yeah. other option? जी सर. कोई और कुछ और हो सकता है इसके बारे में, और कुछ बता सकते हो आप? और तो सकता है. Okay, actually one thing also, you don't have to find out any corner points inside the circle. कोई corner Yes points sir. मिलता है हमें सर्कल के अंदर? No sir. No sir. नो, यहाँ पे कोई corner points है नहीं? ठीक है, नहीं है. we don't have Yes. any corner points, we only have the round face, round shape. Okay, okay, each and Yes. every direction we got a same round shape, right? This is your circle, simple circle, right? Okay, Yes sir. okay, then come to this part, how to create the circle inside your AutoCAD. Okay, how to create this part? For this part, we have the for circle, we have to click on this part also, and then we have the shortcut for this part is C. C, enter for the circle. And then what we do is specify center point of for circle. First, what we do is say specify center point of circle. Click on any point right here, and then first of all we specify center point, and after that, what we write here is radius or diameter, anything. Okay, we have the radius. Suppose we write here is a 50 radius. Then what we got here, we got the radius value is 50 radius, and then we create a circle of 50 radius, right? This is your 50 radius circle. Okay, you can create here. Okay, suppose you want to create a circle by use of diameter, then how can we do that? For this purpose, what you do, just click on C, enter, and then click on this part right here, and then I want to specify the diameter instead of the radius. Then what you do, just D enter for diameter. Okay, and then here for you can write the diameter, right? Diameter is I write here is the 50, and what will we get? Goes here is diameter is 50. Okay, and then this is your 50 diameter, and this is your 25 50 radius. Then diameter of this circle is, इसका diameter क्या होगा और इसकी radius क्या होगी, बता सकता है कोई? इसको मैंने 5 to 50 की radius से बनाया, तो इसकी diameter क्या हो सकती है? Anyone? सिंपल है ये तो, कोई तो बोलो, इसका आधा क्यों होगा? ये रेडियस दे के बनाया मैंने 50 का, तो इसकी डायमीटर वैल्यू क्या होगी? खुशी आप बताओ, 25 क्यों होगा डायमीटर? मैंने रेडियस दिया है, तो रेडियस क्या होता है? Diameter का डायमीटर का half. ना, रेडियस इज डायमीटर हाफ, एंड देन मैंने यहाँ रेडियस दिया है, तो डायमीटर निकालना है, तो उसका क्या करना होगा? डबल Double करना हो होगा, जाएगा. तभी डायमीटर निकले। तो 100, क्या 100. आएगा? 100, 100 इज योर डायमीटर, एंड देन हियर वी व्हाट्स मैंने यहाँ पे 25 का सॉरी 50 का मैंने क्या लिया? डाया लिया है, तो इसके अंदर रेडियस क्या होगी? 100। डायमीटर क्या होता है? रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। तो मगर अगर मैंने 50 का डायमीटर लिया है, तो रेडियस क्या होगा हमारा? 25. 25, राइट? ओके, तो ये 25 रेडियस होगी, राइट? तो बस आपको यही ध्यान रखना है, डायमीटर एंड रेडियस का चेंज। ओके, सपोज ये, ओके, तो आप आ जाओ। तो नेक्स्ट वन इज यू, हम अगर बात करें तो आपके पास डिस्टेंस आ गया, इजिली आप बना सकते हो डायमीटर से एंड रेडियस से, राइट? ओके, किसी भी डायरेक्शन में आपको अगर बनाना हो, तो सपोज यहाँ पे मुझे एक छोटा सा सर्कल बनाना है 10 का, तो मैं 10 का बना सकता हूँ, राइट? तो यहाँ पे कहीं पे भी आप सर्कल बनाना चाहो, ठीक है ना, इस ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन किया हुआ है आपने, तो यहाँ पे इजिली आप इसको क्रिएट कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे मैं इजिली इसके ऊपर क्रिएट कर सकता हूँ, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट में ट्रेंड का दे दिया, एंड देन अगेन यू कैन वांट टू क्रिएट दिस पार्ट हियर, तो मैंने यहाँ पे 10 एजेस यहाँ पे भी दे दिए। ओके, तो आप इस तरह के कई ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, एंड देन है हमारे पास इस तरह का एग्जांपल है जो कि आपको करने भी है, राइट? ओके, तो ये दिस इज योर ऑब्जेक्ट राइट दिस पार्ट। ओके, तो आपको समझ में आएगा कैसे मैं रेडियस सर्कल को बनाऊंगा डायमीटर एंड रेडियस से। यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो ये दो ऑप्शन आपको ऊपर ही स्टार्टिंग में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आप सेंटर टू रेडियस लेते हो, तो आप यहाँ पे ओनली स्पेसिफाई कर सकते हो रेडियस को। ओके, एंड देन इफ यू टेक द वैल्यू एज द सेंटर टू डायमीटर, तो आप यहाँ पे क्या दोगे? सेंटर पॉइंट देने के बाद आपको डायमीटर देना होगा, राइट? तो मैंने 50 का डायमीटर दे दिया, राइट? तो इस तरह से मैं रेडियस एंड डायमीटर यहाँ पे
दे सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। क्लियर? ओके। अब इसके बाद ऑप्शंस आते हैं हमारे पास 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 10 रेडियस एंड देन 10 10 10। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द 2 पॉइंट। सपोज ये मेरे पास एक लाइन है, दिस इज माय लाइन, राइट, एंड देन आई वांट टू क्रिएट अ सर्कल राइट हियर। इन दोनों लाइन के अंदर मैं इसको किसके अंदर रखना चाहता हूँ, लाइन को सर्कल के अंदर रखना चाहता हूँ। आई स्पेसिफाई दिस लाइन एज फॉर्म ऑफ डायमीटर एंड देन मुझे इसकी डिस्टेंस नहीं पता, राइट, ना इसकी डिस्टेंस पता है ना कोई वैल्यू पता है। तो यहाँ पे अब सेंटर रेडियस का तो कोई यूज नहीं है और नहीं डायमीटर का कोई यूज है, क्योंकि हमें पता ही नहीं क्या रेडियस है क्या डायमीटर। आई डोंट नो अबाउट द रेडियस एंड डायमीटर राइट हियर एंड नॉट डोंट नो अबाउट द सेंटर पॉइंट ऑल्सो। यहाँ पे सेंटर पॉइंट मुझे नहीं पता कि इस लाइन का सेंटर पॉइंट क्या है, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। ओके, देन हाउ कैन वी क्रिएट दिस इन फॉर्म ऑफ diameter? Okay, I find out the center point or midpoint of the line, but this is the topics. Okay, so how can we do this thing by use of 2 point radius? How can we do this? First of all, C enter, and after this here we have the option TP, 2P, TTR. Then what you do, just write here is a 2P. What you do, just write here is a 2P, and then enter. Then here we what is specified? Specify first endpoint of the circle of diameter. Here we have the first endpoint, and then here we have the second endpoint. Just click on second endpoint, right? And here this circle you created, right? Yes or no? Okay. Suppose here I create this type of thing. I want to create this type of thing. Okay. And then I want to create this V by the circle. Then how can we do that? For this part, you can also use a 2P. I select this directly one and then click on first and click on second point. Okay. And this will be created, right? Okay. अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से भी बना सकते हो। सपोज ये वी हैव दिस लाइन इज 100 एंड देन आई वांट टू शो द लाइन इज 100 एंड देन here we have this data, okay, and then इस मुझे राइट एंगल ट्रायंगल को किसके अंदर रखना है, सर्कल के अंदर। then what we do, select 2 point circle, okay, तो C enter, you can also click on it। अगर if you don't want to write तो आप क्लिक भी कर सकते हो इसके ऊपर। तो क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट पॉइंट लेना है एंड देन सेकंड पॉइंट लेना है, बस सिंपली। ओके, so you got this type of thing, right? Okay, एसी बंद कर देना उधर से, पंखा चालू कर लो उससे। Okay, you can create this thing by use of this way, right? समझ में? सपोज यहाँ पे मैंने एक लाइन क्रिएट किया एंड देन यहाँ पे मैंने 100 दिया एंड देन here we have the distance is 50, okay, and then here we have the distance is 100 and then here we have to see enter, okay। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, बस आई डोंट वांट टू आई डोंट नो अबाउट द सेंटर पॉइंट है, मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं पता इसका। ओके, तो व्हाट वी डू फॉर दिस पर्पस, व्हाट वी यूज 2 पॉइंट, राइट। तो मैंने 2 पॉइंट्स यूज किया, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट, राइट, and then same thing I use again 2 points and then I create this type of thing, right? Okay, you can create this type of thing also, okay। अब इसमें कुछ और भी चीजें सीखेंगे जो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अभी मॉडिफाई पे हम बात नहीं कर रहे, ओके। तो आप इस तरह की चीजें इजिली क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो बाय यूज ऑफ दिस टूल। दैट्स क्लियर? यस या नो? समझ में आया आपको? हम्म, and ये अब मैं मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू डू दिस। सपोज हियर आई वॉन्ट टू हियर राइट दिस ट्री एंड दिस थिंग, वन सेकेंड, लीजिए। First of all, right here is the L, okay, and then here we have the 100, and then here I make this tree of equilateral triangle, okay। मैंने equilateral triangle बना दिया and then I want to insert this triangle inside the circle,
मुझे इसे सर्कल के अंदर रखना है, राइट? तो आप इसको कैसे सर्कल के अंदर रख सकते हो? हाउ कैन वी डू दैट? मैं 2 पॉइंट से बिल्कुल नहीं कर सकता, अगर मैं कोशिश भी करूँ तो पॉसिबल नहीं है। ओके, अगर मैं इस तरह से करूँ या फिर इस तरह से करूँ तो देख सकते हो सर्कल के अंदर आता है। नो, नो, नॉट एबल टू मेक दिस थिंग, राइट? ओके, तो मैं इस तरह से नहीं बना सकता, राइट? So what we do for this purpose, we have the things is 3 point circle. Okay, we have 3 points right here, 1, 2, and 3. And then अगर मैं 3 point circle से बनाऊँ तो ये this is inside the circle. Okay, so what we do, just C enter for 3 point. What we do, 3P. Right here is a 3P. And then what we do, first of all select first point, then select second point, and then what you select here is third point. ओके, यहाँ पे मुझे सेंटर पॉइंट का नहीं पता था, रेडियस डायमीटर कुछ नहीं पता था, मगर फिर भी मैंने क्या कर दिया, 3 पॉइंट सर्कल की हेल्प से इसको इसके अंदर एडजस्ट कर दिया। यस, क्लियर? ओके, सपोज ये मेरे पास एक रेक्टेंगल, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्क्वायर बना देता हूँ, एंड देन आई वांट टू क्रिएट दिस स्क्वायर राइट हियर। ओके, मैं इसे स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक। एंड देन आई वांट टू इंसर्ट द स्क्वायर इनसाइड द सर्कल फर्स्ट। देन व्हाट वी डू, कि यहाँ पे भी आप 3 पॉइंट से ये काम कर सकते हो। सी एंटर, and then you can also click on the TP, okay, and then first point you select, second point you select, and third point you select, right? तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट को भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, या फिर चाहो तो अलोंग विद 45 डिग्री, अगर 45 डिग्री के अलोंग पे आपके पास डायरेक्शन है तो ओके, यू हैव टू डू दिस थिंग बाय वे। तो आप यहाँ पे 45 डिग्री के अलोंग भी चीजें बनाते हो। ओके, तो मैंने 50 ले लिया। ओके, एंड देन हियर आई क्रिएट द 50, राइट? And then again we create a 50 and see enter. Okay, and then I want to make the circle inside the circle. Okay, make this rectangle inside the circle first. Okay, uh, I select wrong. What we select here, we select the 3 point, right? Here we have 2 3 point. First point is this, second point is this, and third point is this. Okay, by use of this way we can create this type of thing, right? समझ में आया? Yes, Yana? Sir, in this circle, we want circle inside the square or rectangle. Inside the Asking square and rectangle, right? Yeah, I also come this point also. also. Okay, if you need to make the circle inside your rectangle and then inside your triangle, equilateral triangle, I also come this point also. Okay, first of all, we'll talk about the how to insert this thing inside your Okay. circle. Then we talk about this part also. Okay, how can we do that? Okay, then we come to the next phase. Next portion is yours. Suppose here we have the this type of data. Okay, and then I want to here I create a line first, and then here I 45 degree. Okay, and then here I want use this 100, and then here I use it here is 100 again. Here we have to call option 100, and then CN. I want a small circle in between these two lines. Okay, small circle suppose of 10 mm, 10 of radius and 20 of radius, any of the diameter we use, radius we use. Okay, suppose a 10 radius you use, and then I want to create this circle inside the between these two lines, for touching two lines. Okay, for this purpose we have the other way is your tangent radius. You know about the tangent? What is tangent? किसको पता है tangent क्या होता है? What is tangent? Anyone? Tell me what is tangent? Yes. Okay. Touching the border circumference of the circle is called tangent, right? Or wrong? Okay. That's clear. Touching the circumference of the circle without passing through. This is called tangent, right? If you write here, suppose here I want to create the circle first. Okay. C enter. Okay. I create this line, and then here I create a line here. Okay. And then I want to show this.
this line is touching this portion. This is called tangent, and this is your intersect line, right? This is my intersect line, and this is my tangent line. Why? Because this is touching the circle bar. Only touch the circle, not pass through. Okay? Not pass through the circle is called tangent, right? And then I want to create this point. Okay, yeah, I want to create this circle between this line of we on behalf of this is called is a tangent of this circle, and of the radius is 10. Then how can we do that? This thing for this purpose, what we use for this purpose we use I'll see enter first. Okay, what we do just for this purpose you use the enter first, and then after that you want to use TTR. TTR means tangent radius. So what you select T enter. Just click on the T enter, and then first of all specify point on object for first tangent of circle. I select the first tangent first. This is my first tangent, and this is second tangent. Select your second tangent right here. Okay, and then specify your radius. Suppose I take the radius is 10. Then what will be happen? Here we got the circle in between two lines with the passing through the way. That's cool. समझ में आया? Yes or no? How to create this inside this part? समझ में आया? Okay. Again, we do the same thing. TTR, just click on the TTR first. First tangent I select this, and then second tangent I select this, and then enter. Suppose I enter here is a 20. Then you can also enter the 20 right here, okay? But I don't need the 20. I use the 30, okay? So use this path. You can use circle. You can also directly click on this path. Tangent radius. First tangent you select it. Second tangent you select it, and then you want to create 10 radius, okay? Again, you can click on this path again, and then first tangent, okay? And then second tangent, right here is a 10 okay? And then again, I want to create all the corners point as the tangent of the radius is 10. Okay, because in this site, we don't have to specify any center point right here. I have the tangent point and then radius of this part. That's why I can create this thing. That's clear? समझ में आया? Yes or no? All of you, just clear to all of you or not? Okay. Okay. And then if you want to create this between these two circles, if you create this between two, also you can select your TTR right here. First of all, this is your tangent. This is your second tangent right here. And then here I want to create the 25 radius of circle. Okay. This is will not make here. I think this, 1 second. I'll just calculate this first. First of all, I find out this distance. Okay, 50. I select the tangent, first tangent, second tangent. The right here the 25 is the radius. Okay. Give me 1 second. ये हो तो जाना चाहिए था. ठीक है. Okay. Sometime we have to create the issue for this part. Okay. Don't worry about it. Okay. तो आपको अगर यहाँ पे टेंजेंट टू टेंजेंट आप सर्कल के बीच में भी करना चाहो तो यू कैन डू इट ऑल्सो. ओके. तो टेंजेंट आप सर्कल भी कोई भी ऑप्शन हो सकता है सर, जरूरी नहीं कि आपका सिर्फ कोई हो. आप सर्कल को भी एज अ टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हो, या लाइन भी हो सकती है टेंजेंट. टेंजेंट इज एनीथिंग just pass through your circle, not intersect your circle. This is called a tangent. That's clear? All of you? That's clear the tangent point? Okay, next one is your tangent, and tangent. What we use for the tangent, suppose here, I want to create the circle inside this this rectangle, equilateral triangle. Then how can we do that? Here we don't have to know about the center point here, then don't know about the radius of this part. Then how can we do that? For this purpose, we have the option is tangent, and this option is really available in this part. Okay, don't have to write here just the enter, and then here we find out this. Don't have this part is this way. Okay, we just only find out this way by this using this option. Okay, click on this option. First of all, what you do, you click on first tangent.
Okay, first tangent. Okay, click your second tangent and click your third tangent. Okay, then what will you get here? Here you get the circle inside your the triangle, okay, equilateral triangle. And then if you want to create your circle inside this part, okay, or this part also create by use of 10, 10, 10, tangent, tangent, tangent. Here we don't want to know about the radius also, okay. But I click first tangent, click second tangent, click third tangent, and then you got this data, right? Same way, you can select this way, first tangent, second tangent, and then third tangent. That's clear? And if you want to click this data in here, then also you can do it. First tangent, second tangent, and third tangent. And then once you get here, here you get the circle inside the touching all the four circles, right? That's clear, all of you? Yes, sir? Tangent point exactly tangent point center point or straight line random point. Here is we selected. don't have the tangent right here, okay? We have to select the tangent Yes. point, okay? And then also explain the tangent Yes. point where we want to select it, okay? First of all, I created. Okay. First of all, we have this three type of circle. Suppose here we have the three type of circle, right? Okay. And then I create this circle. Okay. And then we have three circles right here. And then I want to create the circle inside of the touching of this circle. Then what you do? First use the tangent changes right here. Select inside the first, second, and third. Okay. This tangent will occur. If I want to create the outside part, outside of this circle, I want to align this circle inside the big circle. Then how can we do that? For this part, what you do? Just click on outside of the part. Okay, tangent point, first, second, and third. Then what will you get? Here we got the outside part, right? And then here this is touching of this part, right? Okay. Okay. You can also create this type of thing also by use of the tangent, tangent, and tangent only. Okay, that's clear. Sometimes you have to need this thing also. Okay. By use of this way, we can create multiple things. I suppose here I want to create this way because here we don't have to find first, second, and third. And then when click it, this circle will be met by this way, right? Okay. That's clear. How to create your Okay. circle? Any doubt? Okay. Any question? No? Then Yes. what we do? No. Okay, that's good. Okay, then here we have the line commands. Here line commands example, so you can do it by use of the line command again. And then here we have the example of circle command. Okay, you can use this examples by use of the circle command. If you have any doubts, any question regarding this, then you can ask me as a tomorrow, right? Okay. ये वाला last चलो ठीक है. See that this example, okay? Here sometimes many of the have this problem right here, okay? See this one example of this part because many of them have two issues and then confused for this part. How can we create this thing? Just see that first. All of you see it, okay? Then how can we do that? For this part, you can use first of all create this rectangle, okay? I create this rectangle by use of L. This is 100, okay? Here we have the 50. And then here we have the 100, and then here we have the C enter, okay? And then what we do for 2 points, by use of 2 points, we can create this line, right? Then select the 2 points, okay? Directly select the 2 points, okay? Click on this, and first point and second point, first circle will be met. And then here I want to select this 3 point, okay? If you on the snap mode, then this will be great. Select your 3 point first. First quadrant you can select it. Here you can select your center midpoint of this line, okay? And then here you can select the midpoint of this line, okay? We will specify also the midpoint right here. That's clear? And then how can we create these two lines? By use of TTT, okay? Tangent, tangent, and tangent. Just click on tangent, tangent. First tangent is this, second tangent is this, and third tangent is this. This line, this circle will be created. After the same way, first tangent, second tangent, third tangent, then this will be created. Okay? By use of this way, you can create this type of join. समझ में आया? Okay, how can we create this thing? That's clear? Yes or no? Mm. Okay. Any doubts? Any question?
टेंजेंट टेंजेंट राइट। अब डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज सीटीटी। ओके, एनी क्वेश्चन? नो, दैट्स क्लियर ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Okay, that's good. Okay, if you need to this part, so you can also write here. Okay, आप अगर चाहो तो इसे लिख भी सकते हो। ओके, अगर आपको जरूरत है तो बाकी चीजें मैं कल बता दूंगा। इरेज का तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज्योमेट्री का मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक। ओके, राइट दिस थिंग। ओके, लिख लो फटाफट ये भी। ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतने